in this year again. We have already done 4, and this is in a row. This is going to be our 16th NAP orientation program. You will learn a lot about the national education policy, about its implementation, and maybe if there have been any queries, any doubts, any apprehensions about the policy and its implementation per se, I think our resource persons, so ably managed by Professor Aftab, will help you kindle those doubts. So I just want to request you for a couple of, these are just requests, and I hope you've all seen the guidelines there on the group. You will be appearing for 2 multiple choice questions. One today, 30 marks, another on the last day of the course, 30 marks. You will get your certificate only if your attendance is sufficient, and we are getting your attendance data. With your joining data, your attendance comes, so you don't need to write anything in the comment box, or you don't need to press the present now button in order to get your attendance marked. Also, I want to request you all to be on mute when you are listening to the resource person. It is encouraged that you keep your videos on, but do unmute yourself only when the resource person gives you a chance. If you want to say something, raise your hand, and as per the queue, you will be invited to speak. So I welcome Professor Sufiyan Beg here today again with us. He's a very, very supportive resource person, as well as a very, very eminent resource person. Professor Aftab, being the coordinator of this course, will give a detailed introduction of Professor Sufiyan. Nevertheless, I also thoroughly enjoy introducing him. But today it's the prerogative of the coordinator. My dear participants, welcome once again to the Aligarh Muslim University, to the UGC, MMTTC, AMU. I know you all have had a long day. I know for this course there is no relieving. You have to join in the evening, and you have to continue to be with us till almost nightfall. But then this certainly must be your dedication to academic excellence, your dedication to quality in education, and your responsibility and sensitivity towards contribution as a practitioner of higher education to nation building. So let's hope we have better days ahead for our country, for us, and let's hope teachers play a very important and a very proactive role in this. So with that, I leave you in the very able hands of the coordinator and our resource person. Welcome once again, and thank you very much. Thank you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Dear participants, good evening to all of you. As Director Professor Faiza Basi ma'am already introduced about the Professor Sufiyan Beg Sahab, I'm going to a brief introduction of today's resource person. Professor M.M. Sufiyan Beg Sahab obtained his BTech Electronics degree from Aligarh Muslim University, Aligarh in 1992 with first rank. He obtained his MTech Microelectronics degree from IIT Kanpur, India in 1994. Thereafter, he joined Department of Electronic Engineering, Aligarh Muslim University, Aligarh, and he has been a lecturer, a senior lecturer, and become the reader in the Department of Computer Engineering in the same university. While on the study leave from there, he obtained his PhD degree in area of computer technology from IIT Delhi. He also visited the University of California at Berkeley as a BT Fellow from November 2005 to October 2006. Professor Sufiyan Beg Sahab, he's also served as a professor Department of Computer Engineering in Jamia Millia Islamia, a Central University at New Delhi from March 2007 to January 2014. Over there, he also served as the head of the Department of Computer Engineering from February 2008 to 2011
Currently, he is the professor and chairman at the Department of Computer Engineering at Aligarh Muslim University, Aligarh. He also serving as the principal of ZH College of Engineering and Technology since August 2015. Professor Beg has published many books and 29 book chapters in the books and 165 research papers on a wide range of topics on web mapping and soft computing. He has also been an invited lecturer at many places in US, UK, KSA, and Pakistan, India as well. Professor Beg was awarded the University Gold Medal for clearing his first in his examination at BSc. Professor Beg has served a reviewer and has been the board of many journals of repute and various conferences and international seminars. His current research interests are in the area of parallel and distributed processing, soft computing, question answering system, natural languages processing, web mapping, and searching. With this brief introduction, I would like to invite our esteemed speaker of today's, Professor Sufiyan Beg Sahab, to speak. I will take a talk with you on outcome-based education and quality assurance. Sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. I'm audible and the slide is... Yes, sir. You are very audible. Yes. Slide is moving also? Yes, sir. Okay, fine. Yes. So, dear participants, a very good afternoon. Shukriya. Shukriya. So today we are going to discuss outcome-based education and how is it going to assure quality for us. This is a very oft-repeated and oft-discussed term, and we must look into the details of the outcome-based education in today's discussion. As has already been introduced, I am the principal of the Zakir Hussain College of Engineering and Technology at the Aligarh Muslim University, Aligarh. So let me begin by throwing a question before all of you. Can we actually quantify quality? Because quantity and quality are two terms that seem contradictory to us. We often say that if you talk about quantity, don't talk about quality. If you talk about quality, don't talk about quantity. But that's not quite true. As the good old saying goes, what you can't measure, you can't control. So if you can't measure temperature, you won't be able to control it. If you can't measure speed, you won't be able to control speed. And this process goes on, and finally, if you can't measure quality, you won't be able to control quality either. So we do need to have a quantification process for the quality in order to enhance and control the quality. Now, in order to emphasize upon what I'm saying, what you can't measure, you can't control, let me narrate a sad accident that happened a few years back, but we have a lesson to learn from it. There was this Air France flight which was flying from a South American country to Paris. The flight on the way crashed into the Atlantic Ocean. Everybody on board perished. A very sad and a tragic accident. But gave a lesson. When people started investigating, please mute everybody. Shakil Akhtar, mute kar lein. Shakil Akhtar, kindly mute your mic. Okay. Sir, please continue. So I was saying that a flight of Air France that crashed into the Atlantic Ocean, and when people started investigating the cause of the crash, and they dug out the human remains from the depth of the ocean, to their shock and dismay, they found that the bones of the human remains were broken. Everybody was shocked. The flight crashes into the waters, and how can the bones be broken? And that too for everybody. They kept on investigating, and they came to the conclusion that actually the speed sensor of the aircraft had gone bad. At that height, there is no way by which you can gauge the speed if the very speed sensor goes bad. To the extent that the plane oversped, and because of the air pressure at that height even, the plane broke into two, and because of the air pressure, the bones of the human beings were broken before they all drowned into the ocean. A very sad accident.
But that gives us a lesson. If we can't measure speed, we won't be able to control it. Now, this is something you can experience yourself. When you are driving on a highway, if you don't look at the speedometer, you just can't say whether you are driving at 100 kilometers per hour, or 120 kilometers per hour, or even beyond. Even though the trees are going by, the road is, is going underneath, but still you are not able to measure the speed. And if you're not able to measure the speed without the speedometer, you won't be able to control it. ठीक है, इसी तरह अगर हम क्वालिटी को मेजर नहीं करेंगे तो क्वालिटी को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, है ना? So the bottom line remains, assessing the attainment of quality is the key to quality control and enhancement. When we talk about quality control, it has to be enhancement. Nobody wants to bring the quality down. It has to be enhancement only, right? Now, what are the levels of quality in education? First and the foremost is the approval, where you have the bare minimum infrastructure in place. The teachers are there, the lab is there, the library is there, classroom is there, and you get the approval. For example, in the realms of technical education, All India Council for Technical Education provides the approval. Then the next level of advancement comes from the quality assurance. You must have heard about ISO certification, International Organization for Standardization. Just as they provide quality certification for the products, they also provide quality certification for the services. So an educational institution may get ISO certification, wherein it would be looked into what is the qualification of teachers who are teaching there, what is the quality of equipment in the labs, how good are the teaching aids and the classrooms, whether they are smart classrooms or not, whether the books are of the latest edition or not, and so on. So that is for the quality check. Next level comes, which we call accreditation. It not only does the quality check, it also provides mutual recognition. For example, my educational institution may have ISO certification. When a student who graduates from my college goes to another university or a college within India or abroad, they may accept ISO certification, they may refuse. They may say that, well, we don't accept ISO certification. What is the way to make it mandatory on them to accept the quality of degrees that we are awarding? That is through accreditation, which comes under an accord, an agreement signed by several countries that we will mutually recognize the degrees accredited by the respective boards. एक एग्रीमेंट साइन होता है बहुत सारी कंट्रीज के बीच में कि हम लोग एक दूसरे की डिग्री को जो उनका रेस्पेक्टिव बोर्ड सर्टिफाई कर देगा, एक्रेडिटेशन दे देगा, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना? सो बाय वर्च्यू ऑफ दैट एग्रीमेंट carried out for accreditation, they are duty bound to accept the degree. They just can't refuse it, है ना? इस पॉइंट को और एलाबोरेट करेंगे आगे. Before that, let me tell you something which most of you may not be knowing. So try to pay attention to what I'm going to say next. In India, no university can become a university unless passed by an act of law. I repeat, in India, no university can become a university unless passed by an act of law. So if it happens to be an act of the Indian Parliament, that becomes a central university. If it happens to be an act of the State Assembly, it becomes a state university. So now you know what is the difference between a central university and a state university. It's not about funding. कि funding कहाँ से आ रही है? Funding central government से आ रही है या state government से आ रही है? It's not about funding. Because there could be private universities. Funding कहीं से नहीं आ रही है. How will you classify the private university into a central university or a state university? It is actually the place where the law has been passed for that institution to become a university.
राइट। अब जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, व्हाई? बिकॉज देयर इज द AMU एक्ट पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट। ये तो हो सकता है कि कई यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन एक्ट हो, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज एक्ट या कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट, बट देयर हैज टू बी एन एक्ट to back the constitution and the institution of that university। ठीक, तो सबसे ऊपर होता है एक्ट, जो कि पार्लियामेंट में पास हुआ या स्टेट असेंबली में पास हुआ। एक्ट के नीचे होते हैं स्टैट्यूट्स, देन यू हैव ऑर्डिनेंस एंड देन यू हैव रेगुलेशन। ठीक, एक्ट तो बहुत कंसाइज और बहुत ही ब्रीफ होगा। Details will come in statutes, further details will come in ordinance, further details will come in regulations। So see, the power is percolating down। एक्ट में पावर कहां से आई? पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली से आई। That power is passed on to statutes, that is passed on to ordinance, that is passed on to regulation। The vice chancellor of a university, if he or she takes an action that is tenable by law, because the power is granted to the vice chancellor by the act or statutes। ऐसी वाइस चांसलर ने किसी, प्लीज म्यूट, ऐसे ही वाइस चांसलर ने किसी को PVC बनाया, डीन बनाया, प्रॉक्टर बनाया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया, दे गेट देयर पावर थ्रू द वाइस चांसलर, हु इन टर्न इज गेटिंग द पावर फ्रॉम एक्ट एंड स्टैट्यूट्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एक्रेडिटेशन में पावर आ रही है उस एग्रीमेंट से जो साइन किया है कंट्रीज ने, राइट। तो एक्रेडिटेशन नॉट जस्ट ISO सर्टिफिकेशन तो रिफ्यूज कर सकता है कोई, लेकिन एक्रेडिटेशन सिग्नेटरी कंट्री रिफ्यूज नहीं कर सकती, बिकॉज दे हैव साइन टू दिस एग्रीमेंट, राइट। नाउ इन इंडिया देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्रेडिटेशन दैट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, NAC and NBA। NAC is the institute-wide accreditation, whereas NBA is degree-specific। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। NAC में यह है कि the entire institution gets the accreditation and hence all the degrees awarded by that institution gets the accreditation। NBA में क्या? Degree-specific। If accreditation comes to BTech in computer science, it stays with BTech in computer science। You can't stretch it to MTech in computer science or BTech in electronics or even BTech in IT। No, it is degree specific। तो इंस्टीट्यूट वाइड और डिग्री स्पेसिफिक, अपने अपने फायदे नुकसान है। NBA का फायदा ये है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग डिग्री उसको मिलेगा, वीक डिग्री को नहीं मिलेगा। NAC में क्या, वीक डिग्री की वजह से हो सकता है स्ट्रॉन्ग डिग्री को भी ना मिल पाए क्योंकि इंस्टीट्यूशन को नहीं मिलेगा, है ना। तो दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। Now, before proceeding any further, let's understand what is accreditation। So this is one of the many definitions of accreditation that you may come across। Now you must be wondering कि definition तो unique होती है, हम ये क्यों कहते हैं one of the many definitions? The reason is when something very diversified we talk about, something which is very vast, then people may describe it in different ways। Just let me remind you of the good old story wherein a few blindfolded person were asked to touch an elephant and describe it। So the blindfolded person who touched the trunk of the elephant, he said it's like a python। The one who touched the legs of the elephant, he said it's like a tree trunk। The one who touched the tummy of the elephant, he said it's like a wall। Somebody who touched the ears of the elephant, he said it's like a big hand fan। तो एक ही चीज है, एक ही एनिमल है, बट पीपल आर डिस्क्राइबिंग इट इन डिफरेंट वेज बिकॉज दैट इज टू बिग एन एनिमल टू बी एनकम्पास्ड बाय द फील ऑफ अ सिंगल पर्सन। इसी तरह ये डेफिनेशन एक है एक्रेडिटेशन की, which I like the most, that is why I'm sharing with you। Now what does it say? Formal recognition of an educational program or institution, as the case may be। Program in the case of NBA and institution in the case of NAC, by an external agency on the basis of impartial assessment। ये दोनों underline किया मैंने, external agency and impartial assessment of the attainment of specific requirements against well-defined criteria। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि एक्सटर्नल एजेंसी एक्रेडिटेशन करे, आपकी इंटरनल एजेंसी नहीं मानी जाएगी, और इम्पार्शियल असेसमेंट हो।
देखिए, इम्पार्शियल असेसमेंट को समझाने के लिए लेट मी अगेन टेक यू टू अ कपल ऑफ टर्म्स दैट वी क्वाइट ऑफन गेट कंफ्यूज विद। एक चीज होती है सब्जेक्टिविटी, एक चीज होती है ऑब्जेक्टिविटी। Teachers, the teachers and students have a very narrow perception of subjectiveness and objectiveness. Objective हम समझते हैं multiple choice questions, fill in the blanks, true false. Subjective मतलब ऐसे टाइप, ठीक है, गलत नहीं है, but that's a very narrow definition. Objective का मतलब ये है कि you vary from person to person, you change from person to person, the correct answer remains the same. Subjective में ये है the same essay may be given 8 out of 10 by person A, it may be given 8.5 out of 10 by person B, person C may give 7.5 out of 10. तो वही ऐसे अलग अलग मार्क्स पा रहा है when you vary the subject, right? So that is subjectivity. तो impartial assessment का मतलब ये है कि assessment has to be objective, it should not be subjective. चेंज नहीं होना चाहिए एक्टिवेशन का रिजल्ट अगर हम टीम चेंज करें तो, और ऐसे एक्सटर्नल एजेंसी का होना जरूरी है। आप ये कहें साहब इंटरनल एजेंसी रखेंगे और ऑब्जेक्टिव रखेंगे, नहीं माना जाएगा। और आप कह रहे हैं हम एक्सटर्नल एजेंसी तो रख लेंगे लेकिन वो सब्जेक्टिव होगी, वो भी नहीं माना जाएगा। दोनों चीजें जरूरी हैं, एक्सटर्नल एजेंसी भी हो और इम्पार्शियल असेसमेंट भी। एंड द थर्ड थिंग इज वेल डिफाइंड क्राइटेरिया। The rules of the game have to be decided before the game begins, and let this be known to everybody. Let this not be a hidden secret. किस किस पैरामीटर्स पे हम एक्टिवेशन करेंगे वो सबको बताइए ताकि लोग अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें, है ना। हम लोगों का क्या तरीका होता है, हम लोग चीज़ों को डिक्लेयर नहीं करते हैं और फिर पकड़ते हैं हम, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार मैं गया दिल्ली एयरपोर्ट, आई हैड टू पिक समबडी अप, ही वाज एन एल्डरली पर्सन, so I wanted to drive my car to the closest possible point. So there was this policeman sitting there. I drove in front of him slowly so that if he has to stop, he'll stop me. But he didn't stop me. So I kept driving. When I picked the person and I was driving back, the policeman stopped me. आप वहां क्यों गए, वो तो नो एंट्री जोन है, आपका चालान होगा। मैंने कहा कहीं लिखा नहीं है। उसने कहा मैं तो बैठा हूं। मैंने कहा मैं आपके सामने से गया, बट यू डिड नॉट स्टॉप मी, आपने रोका क्यों नहीं। तो यू नो व्हाट दैट पुलिसमैन सेड, ही सेड अगर उस वक्त मैं रोक लेता तो इस वक्त मैं आपको पकड़ता कैसे। तो हमारी टेंडेंसी होती है पकड़ने की, रोकने की नहीं होती है। एग्जाम में एज टीचर्स हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चा चीटिंग ना करे, ना ये कि चीटिंग कर ले और फिर हम पकड़े और उसको फॉर्म भरवाएं, उसका रस्टिकेशन करवाएं। दैट शुड नॉट बी द केस, राइट। सो वी हैव टू हैव अ वेल डिफाइंड क्राइटेरिया, चीजें पता होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। I was visiting my friend in England. We were driving in his car. All of a sudden, the car started beeping. मैंने कहा ये कैसी बीप आ रही है। उसने कहा there is a police van nearby. मैंने कहा how your vehicle knows? उसने कहा यहाँ पे एक डिवाइस मिलती है, आप वो लगाइए, कोई भी पुलिस वैन करीब आएगी तो ये बीप करेगी। मैंने कहा ये तो इलीगल हुआ। उसने कहा नहीं नहीं, दिस इज वेरी मच लीगल। पुलिस वैन को डिक्लेयर करना चाहिए कि हम आसपास हैं ताकि कोई क्राइम ना करे, और उसके होने के बाद भी कोई क्राइम करता है, देन ही और शी हैज टू बी पनिश्ड। इसीलिए आप देखें हर जगह बोर्ड लगा रखा है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, वी नीड टू कॉशन पीपल, यू आर बीइंग वॉच्ड। और फिर भी कोई क्राइम करता है, देन ही और शी इज पनिशेबल, राइट। तो वेल डिफाइंड क्राइटेरिया होना चाहिए। रूल्स ऑफ द गेम हैव टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर द गेम बिगिंस। So formal recognition of an educational program or institution by an external agency on the basis of impartial assessment of the attainment of specific requirements against well-defined criteria. ये एक definition accreditation की हुई। Talking about accreditation in India, institutional accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAC), which is an autonomous body established by the University Grants Commission in 1994. For technical programs, we have National Board of Accreditation, which does diploma level to postgraduate level in engineering, management, architecture, pharmacy, hospitality, mass communication, and the list may go on. So significance of accreditation क्या है? At national level,
it becomes easier for students and parents to select the institutions and programs for admission. अगर accreditation है तो admission ले लो, क्योंकि जो डिग्री मिलेगी वो हर जगह acceptable होगी. Accreditation नहीं है तो वहां admission मत लो, क्योंकि डिग्री accept हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें. It helps employers in deciding about the institutions for recruitment of graduates. If there is accreditation, there is a certain minimum quality check that must have been carried out, so they can pretty well recruit graduates from there. It helps institutions to avail the benefits from regulatory bodies and funding agencies. It happened with us. We had the accreditation for all our BTech programs and almost all MTech programs. So we could get a hefty funding of 15 crores from the World Bank under the TECIP project, Technical Education Quality Improvement Project. तो उनकी रिक्वायरमेंट ही ये थी कि आपके पास accreditation होना चाहिए. फिर हमें TECIP phase 3 मिला, in which we could get another 7.7 crores. So that was all by virtue of the accreditation that we had. इसी तरह regulatory bodies, आपने सुना होगा grade 1 autonomy, grade 2 autonomy, grade 3 autonomy, based on the NAC score. This different grades of autonomy are given by University Grants Commission. उसके अपने अपने perks और उसके अपने अपने privileges होते हैं. Last but not the least, it helps institutions in deciding about the transfer of students or the exchange of students. दो institution है, दोनों का accreditation है, they are at the same level. You can seamlessly exchange students for a semester or for a session. अब एक institution तो accreditation मिला हुआ है, एक का नहीं मिला हुआ है. They are not at the same level. So in order to exchange students, you will have to carry out extra exercise. वह डिग्री इक्विवेलेंस देखो, सिलेबस क्या है और टीचर्स कैसे हैं, सब चीज पता करो. देन ओनली वी कैन एक्सचेंज स्टूडेंट्स. ये तो फायदे हुए नेशनल लेवल के. इंटरनेशनल लेवल, मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर परसुइंग हायर स्टडीज एंड एम्प्लॉयमेंट in other countries. Again, by virtue of the accord that must have been signed, the mobility of students for either higher studies or employment, that becomes seamless. इस पार्ट को और एलाबोरेट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. ग्लोबल मोबिलिटी, इट कम्स थ्रू द मल्टीनेशनल अकॉर्ड्स फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एक्रेडिटिंग प्रोसेस एंड देयरबाय रिकॉग्नाइजिंग द एक्रेडिटेशन. जैसे वॉशिंगटन अकॉर्ड 1989 में साइन हुआ for engineering degree program, Sydney Accord in 2001 for engineering diploma polytechnic programs, Dublin Accord for engineering technician program, Seoul Accord in 2008 for professional engineers in computing and IT related fields, है ना. तो अब इसमें से जैसे अगर हम बात करें वॉशिंगटन अकॉर्ड की, so this was an accord and agreement signed among 6 countries: Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK and US in the year 1989 to begin with. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कि आयरलैंड अगर अपने किसी बोर्ड से डिग्री को एक्रेडिटेशन दे रहा है, सो दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस. कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता क्योंकि साइन किया हुआ ना अकॉर्ड. Likewise, if New Zealand provides accreditation to any of its degrees, that will have to be accepted by Australia, Canada, Ireland, UK, US, and so on. So the purpose was to mutually recognize and accept the qualifications accredited by signatories. The accord at present has 15 full signatories and 5 provisional signatories. This number may go up or down. आप सोच रहे होंगे अब तो जाना समझ में आता है, डाउन कैसे? मैं आपको एक hypothetical example देता हूं, may not be realistic. For instance, Ukraine happens to be one of the signatories of any accord. वहां वॉर शुरू हो गई. अब यूक्रेन ना किसी की डिग्री को एक्सेप्ट कर सकता है और ना उसकी डिग्री कोई और एक्सेप्ट करेगा. तो यूक्रेन ने विदड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट कि भाई आप हमें फोर्स नहीं कर सकते कि हम आपकी डिग्री को एक्सेप्ट करें, और ना आपके ऊपर बाइंडिंग है कि यू एक्सेप्ट द डिग्रीज एक्रेडिटेड बाय अस. सो इन सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस और फॉर एनी डैम रीजन, if a country wants to withdraw from the accord, it has to be both ways. अब उसकी डिग्री कोई और नहीं मानेगा और किसी और की डिग्री इसको नहीं माननी पड़ेगी, है ना. So members of Washington Accord have outcome based accreditation.
तो अब क्या पता लगा कि आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन की पावर, आउटकम बेस्ड एजुकेशन को पावर मिल रही है वॉशिंगटन अकॉर्ड से। वॉशिंगटन अकॉर्ड मेक्स इट मैंडेटरी टू हैव आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन, तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन पढ़ना जरूरी है। और अब तो नैक भी कह रहा है कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन हो, तो एनबीए और नैक दोनों बॉडीज ये कह रही हैं कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये सिग्नेटरीज ऑफ वॉशिंगटन अकॉर्ड है। मैंने कहा ऐड डिलीट होते रहते हैं, इंडिया भी ऐड हो गया इसमें। व्हाट आर द डिफरेंट एक्रेडिटेशन मॉडल्स? देखिए, पहला मॉडल है मिनिमल मॉडल। इट डज नॉट इनकरेज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आज की डेट में आपके पास क्या क्या है उसकी बेसिस पर एक्रेडिटेशन मिल जाएगा। फ्यूचरिस्टिक नहीं है मिनिमल मॉडल। That is a problem with the developing countries. If we have to construct a bridge, we will take the traffic data for today. आज कितना ट्रैफिक है उस ब्रिज पर, उसके हिसाब से हम डिजाइन कर देते हैं। By the time the bridge gets completed, it has already fallen short because the traffic has exceeded our estimate. डेवलप्ड कंट्री क्या करती हैं? वो आज से 15 साल का डेटा एक्सट्रापोलेट करते हैं कि आज से 15 साल बाद इस ब्रिज पर कितना ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है, एंड अकॉर्डिंगली दे डिजाइन द ब्रिज। आफ्टर 15 years they sit down and evaluate whether our estimate has gone fine or have we exceeded. अगर एक्सीड हो रहा है या लिमिट पे पहुंच रहा है तो ब्रिंग डाउन द ब्रिज एंड डिजाइन अ न्यू ब्रिज। और अगर अभी ट्रैफिक वहां नहीं पहुंचा है, दे कैन ऑलवेज टेक अ डिसीजन, ओके दिस ब्रिज विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 years, आफ्टर 5 years विल सिट अगेन। तो मिनिमल मॉडल डज नॉट इनकरेज। आज की डेट में आपके पास चीजें हैं, एक्रेडिटेशन मिल गया, कल को क्या होगा ये आप नहीं देख रहे, है ना। फिर एक होता है इनपुट आउटपुट मॉडल। आपको इनपुट क्या मिला, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड and what is the quality of graduates emerging out. Input output model. फिर एक होता है आउटकम मॉडल। Suppose there is a farmer who is given the most fertile piece of land, the best fertilizers, best seeds, ample amount of water, but the crop is not up to the mark. So there's something fundamentally wrong. Things are not gelling well. What ultimately matters to a farmer? It is the yield or the crop. Yes, true, for a reasonably good crop or yield, you need to have a reasonably good amount of inputs, right? But ultimately, we have to measure the outcome. इसी तरह किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो प्रोडक्ट है, ग्रेजुएट्स हैं, if we are able to measure their achievements and their quality, then that serves the purpose of the accreditation of that institution. Now, what is outcome-based education? Starting with a clear picture of what is important for students to be able to do, then organizing the curriculum, delivery, and assessment to make sure learning happens. So you have to set the goal first. You have to set the target, the bar first. कोई athlete है वो high jump करना चाहता है. So the athlete has to set the bar first and then assert to jump and cross the bar. कोई वेट लिफ्टर है, वो पहले वेट सेट करेगा, फिर उसको जोर लगाकर उठाएगा, और उठा लेगा तो फिर और वेट ऐड करेगा, या हाई जंप वाला अगर क्रॉस कर लेगा तो बार को और ऊपर रेस कर देगा. So likewise, in the outcome-based education, you start with a clear picture of what is important. You set the bar first. Then you stretch by organizing the curriculum, delivery, and assessment to make sure learning happens and you are ultimately able to cross the bar of quality that you have set for your students. आप कहेंगे एग्जाम्पल्स तो मैंने दोनों एथलेटिक्स की दी, वेट लिफ्टिंग की दी और हाई जंप की दी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एंड एजुकेशन. तो एक उसकी एग्जाम्पल भी देख लीजिए. When you get a good book to study, at the beginning of every chapter, the author lists these are the concepts that you can expect to learn during this chapter. अब उससे क्या होता है, आप एक्स्ट्रा कॉशियस रहते हैं, अरे मुझे इस चैप्टर में ये सीखना है,
Whenever you come across that topic, you start paying more attention. Oh, this is the goal of reading this chapter. आप पढ़ जाते हैं. Towards the end of the chapter, he summarizes by saying that this you have learned in this chapter. अब आप assess करते हैं कि आपने ये सब चीजें सीख ली कि नहीं सीखी. नहीं सीखी, then you start all over again. आप फिर शुरू में चैप्टर में से पढ़ना शुरू करते हैं until you are able to get all the concepts described in that chapter. है ना? तो इसी तरह आउटकम बेस्ड एजुकेशन में भी यू सेट द बार फर्स्ट एंड देन ऑर्गेनाइज द curriculum, delivery and assessment to make sure learning happens. Pictorially, outcome based education is what the student should be able to do. फिर उसके बाद आप आउटकम बेस्ड करिकुलम एंड आउटकम बेस्ड लर्निंग एंड टीचिंग, हाउ टू मेक स्टूडेंट्स अचीव द आउटकम. और फिर फाइनली आप असेस करते हैं हाउ टू मेजर व्हाट द स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड, बिकॉज व्हाट यू कांट मेजर यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल. तो आप पहले तो यू सेट द गोल फर्स्ट, you achieve it, you try to achieve it, and then you assess whether you've actually achieved or not. अब आउटकम बेस्ड एजुकेशन को समझाने के लिए ये पायरामिड आपको समझना पड़ेगा. इसमें देखिए, डिजाइन इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट असेसमेंट हैपेंस फ्रॉम बॉटम टू अप. क्या मतलब है? सबसे पहले विजन सेट करना पड़ेगा. इन ऑर्डर टू रीच दैट विजन यू विल हैव टू सेट द मिशन. Then you have to set the program educational objectives. Then you have to set the program outcomes. Then you have to have the course outcomes. तो ये तो डिजाइन चलेगा. असेसमेंट में सबसे पहले कोर्स आउटकम को असेस किया. ये क्या है ये सब मैं समझाऊंगा, एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा. अभी तो आप सिर्फ फ्लो समझ लीजिए. फ्लो ऑफ डिजाइन इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्लो ऑफ असेसमेंट इज फ्रॉम बॉटम टू अप. ठीक है. अब ये क्या क्या है उसको समझने के लिए we'll have subsequent slides. Program outcomes are those qualities which the students should have at the time of graduation. इसीलिए वो graduate attributes से align है. Graduate attributes are those attributes or qualities that the students should have at the time of graduation. ठीक. अब एक एक करके इनको समझा जाए, है ना. पहले तो विजन और मिशन में फर्क समझिए. विजन एंड मिशन. What is vision? Let me tell you a story. When we were students of BTech at the Aligarh Muslim University, we had a professor of mechanical engineering who had an old Fiat car. Those were the times when India had just two cars, Fiat or Ambassador. कोई तीसरी गाड़ी होती थी तो कहते थे ये imported है. So he had that old Fiat car, but at the back of the car there was a sticker which read, "When I grow up, I want to be a Rolls Royce." ओल्ड फिएट कार के पीछे स्टिकर लगा हुआ है, उस पे लिखा है "When I grow up, I want to be a Rolls Royce." Sounds funny, but that's a very good example of the vision. That was the vision of the car. What you want to become when you grow up. How do you want your institution to look like 30 years down the line, 40 years down the line, 50 years down the line, right? तो वो होता है तो विजन. मिशन क्या है? शॉर्टर गोल्स टू अचीव विजन, है ना. विजन तो समझिए छत पर जाना है, और मिशन आर द स्टेप्स दैट विल टेक यू टू द रूफ, राइट. एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ देयर आर सम स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस अमंग्स यू, और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, तो उसमें एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग. और अगर नहीं भी पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा, कंप्यूटर साइंस के आप ग्रेजुएट नहीं हैं, इवन देन फ्रॉम द वेरी नेम यू कैन सी कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग इज विजन एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग इज मिशन. एक एग्जाम्पल ले लीजिए. कोई प्लेयर है, वो कहता है आई वांट टू बिकम द नंबर 1 प्लेयर इन द होल वर्ल्ड. दैट इज हिज और हर विजन. इन ऑर्डर टू रीच दैट विजन, ही और शी विल सेट स्मॉलर गोल्स कि मुझे इस सीरीज में कितने रन बनाने हैं, कितने कैचेस लेने हैं, कितने विकेट्स लेने. सो सीरीज बाय सीरीज, मैच बाय मैच, एज ही और शी कीप्स अचीविंग द मिशन, अ डे वुड कम दैट ही और शी विल बिकम द नंबर 1 प्लेयर. समझ गए? तो ये है फर्क. विजन आप सेट करते हैं, और विजन को पहुंचने के लिए ये आपके मिशन स्टेटमेंट्स होते हैं. जैसे जैसे मिशन स्टेटमेंट पूरे होते जाएंगे, वैसे वैसे आप विजन के करीब होते जाएंगे, एंड अ डे वुड कम व्हेन यू विल रीच द विजन. ठीक.
तो ये तो ऊपर की दोनों चीजें हुई जो इंस्टीट्यूट लेवल की होती हैं, विजन मिशन। ये दोनों प्रोग्राम लेवल की होती हैं, और ये लास्ट लेयर जो है वो कोर्स लेवल की होती है। तो अभी हम इंस्टीट्यूट लेवल का विजन मिशन देख रहे हैं, है ना। अब आएगा कहां से विजन मिशन? ऐसा नहीं है कि आप रात में सोए और आपको ड्रीम में दिख गया कि ये विजन रख लो, ये मिशन रख लो। अच्छा, मान लीजिए ड्रीम में दिख भी गया और आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, यू वोंट असर्ट टू अचीव दैट विजन मिशन बिकॉज यू गॉट इट द इजी वे। व्हेन यू evolve your vision mission a hard way, then you will put in efforts to achieve that vision mission. जो चीज आसानी से मिल जाती है हम उसको वैल्यू नहीं करते, है ना। सो बेटर नॉट टू ड्रीम योर विजन मिशन, बेटर टू फाइंड इट इन द प्रॉपर वे। और प्रोसेस क्या है उसका? आर्टिकुलेशन ऑफ विजन मिशन का प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप जैसे अगर डिपार्टमेंट विजन मिशन सेट करना चाहते हैं तो उसको अलाइन कीजिए इंस्टीट्यूट के विजन मिशन से। अब आप सोच रहे होंगे कि हम डिपार्टमेंट के विजन मिशन की बात क्यों कर रहे हैं आपसे? why I'm not talking about institute vision mission? The reason is that you're all young faculty members right now. You must be worried about the department vision mission. A day would come when you will become the principal or the director or the vice chancellor of a university. Then you will start worrying about the institute vision mission or the university vision mission. Process same ही रहेगा। यहां तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट विजन मिशन हैज टू बी अलाइंड विद इंस्टीट्यूट विजन मिशन। अब दो बातें हैं यहां पर। पहली बात तो ये कि अलाइनमेंट क्यों जरूरी है। आपने वो जोक सुना होगा, देयर वर दीस फोर फ्रेंड्स हु पूल्ड अप मनी एंड बॉट अ कार टू रन एज अ टैक्सी। पहला दिन गुजर गया, नोबडी केम टू हायर देयर टैक्सी। When people started asking कि तुम्हारी टैक्सी को हायर क्यों नहीं किया, तो पता लगा all four of them were so stupid that they were sitting in the car the whole day by themselves. वो चारों खुद ही कार में चढ़े बैठे थे। अब किसी को गाड़ी खाली नहीं दिख रही थी तो वो हायर नहीं कर रहा था। तो उनको बताया गया, नो नो प्लीज गेट डाउन फ्रॉम द कार, लेट इट बी अनऑक्यूपाइड, ओनली देन पीपल विल हायर योर टैक्सी। दूसरे दिन द कार डजंट स्टार्ट, they want to push it and start. The whole day they kept pushing but the car did not move even an inch. क्या रीजन था? उनमें से चार में से दो तो आगे से पीछे कार को पुश कर रहे थे और दो पीछे से आगे पुश कर रहे थे। अब जाहिर है कार कैसे आगे बढ़ेगी? कार है और दो आगे से पीछे पुश कर रहे हैं और दो पीछे से आगे पुश कर रहे हैं। द कार रिमेन्स एट द सेम पॉइंट। क्या करना चाहिए? एक लाइन में पुश करना पड़ेगा, चाहे आगे से पीछे चाहे पीछे से आगे, जो भी एक लाइन में पुश करना पड़ेगा। तो इसी तरह इंस्टीट्यूट विजन मिशन जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उसी डायरेक्शन में डिपार्टमेंट विजन मिशन भी होना चाहिए। अब इंस्टीट्यूट विजन मिशन तो एक डायरेक्शन है, डिपार्टमेंट दूसरी डायरेक्शन दे रहा है, तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। तो पहली बात तो ये कि दे हैव टू बी अलाइंड। दूसरी बात क्या कि आप सोच रहे होंगे कि कल को जब हम प्रिंसिपल डायरेक्टर वाइस चांसलर बनेंगे तो इंस्टीट्यूट विजन मिशन को किससे अलाइन करेंगे, है ना। तो इंस्टीट्यूट विजन मिशन अलाइन किया जाता है विजन मिशन ऑफ द फाउंडर, जिसने उस इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया, उसका क्या विजन मिशन है, उससे अलाइन किया जाता है इंस्टीट्यूट विजन मिशन, विच इन टर्न इज अलाइनिंग द डिपार्टमेंट विजन मिशन। और फिर आप कंसल्टेटिव प्रोसेस लेते हैं, फैकल्टी से पूछते हैं, यू आस्क फ्रॉम इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, डेटा ऑन फ्यूचर लेते हैं, तभी तो मिनिमल मॉडल से ऊपर उठेगा जब आप डेटा ऑन फ्यूचर लेंगे। प्रोफेशनल बॉडीज से पूछते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं, यू गैदर देयर व्यूज, यू रिव्यू देम, पुट इट बैक अगेन द स्टेक होल्डर्स। वो एग्री कर जाते हैं तो आप उसको विजन मिशन बना लेते हैं, वरना यू टेक अनदर इटरेशन, वर्जन 1.0, वर्जन 2.0, 3.0, 3.1। फाइनली व्हेन यू डिसाइड दैट दिस इज इट, दिस इज आवर डिपार्टमेंट विजन मिशन, इट इज नॉट कार्व्ड इन स्टोन। उस विजन मिशन की कोई एक्सपायरी तय होगी कि ये विजन मिशन हमने बनाया है 30 साल के लिए, 30 साल का विजन है, 20 साल का मिशन है। 20 साल बाद हम बैठेंगे, विल रिविजिट मिशन एंड सी वेदर इट नीड्स एनी मॉडिफिकेशन और चेंज। आफ्टर 30 years we'll sit down again and review whether our vision needs any change or not, है ना।
क्योंकि हमने डेटा ऑन फ्यूचर जो है वो 20 साल का या 30 साल का लिया हुआ है, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ विजन एंड मिशन. फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का, जिसका मैं प्रिंसिपल हूँ, उसका विजन मिशन मैं आपको बताता हूँ. इसको ऑब्वियसली दिस इज द विजन मिशन ऑफ द कॉलेज, सो वी हैव टू align it with the vision and mission of the founder. So in line with the vision of Sir Syed Ahmad Khan, the founder of the university, the Zakir Hussain College of Engineering and Technology has always stood for peaceful coexistence, academic excellence and scientific temper. ये विजन था फाउंडर का. तो हमने इससे अलाइन करके अपने कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज का विजन बनाया, टू बिकम एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस. देखिए यहां से हमने इसको अलाइन किया. इन साइंटिफिक यहां से अलाइन हुआ और उसमें फर्दर ऐड किया टेक्निकल एजुकेशन, बिकॉज वी आर एन इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड रिसर्च विद स्टैंडर्ड्स एट पार विद नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिप्यूट एंड टू सर्व एज क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइडर. ये आई पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात. ये प्रोसेस यही फॉलो किया हमने, लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करके वी अलाइन विद द विजन एंड मिशन ऑफ द फाउंडर, and then we devise the vision of our engineering college. Now, in order to reach this vision, achieve this vision, we have the mission statements: to offer state-of-the-art UG, PG doctoral programs, to make policies and atmosphere to attract and retain best faculty, to create an ambience in which new ideas and cutting-edge research flourish through effective curriculum and infrastructure, so as to produce the leaders and innovators of tomorrow, to produce ethically strong and morally elevated human resource to serve mankind, to undertake collaborative projects and consultancy for long-term interaction with the academia and industry, to be among top 10 engineering institutes of India. अब जैसे जैसे हम मिशन अचीव करते जाएंगे, जैसे जैसे हम मिशन अचीव करेंगे, हम अपने विजन की तरफ बढ़ते रहेंगे. ये हमारा विजन जो है, तो ये हमारे स्टेप्स हैं. ये सारे 6 स्टेप्स हैं. 6 स्टेप जब हम लेंगे तो हम विजन के करीब पहुंचते जाएंगे. अब उस पिरामिड के 2 पार्ट कवर हो गए, विजन मिशन कवर हो गया. अब हम आ रहे हैं प्रोग्राम लेवल, पीईओ और पीओ. क्या फर्क है दोनों में? देखिए, पीईओ आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ मैच्योर्ड ग्रेजुएट्स. हाउ विल आवर ग्रेजुएट्स सेल्फ डेवलप the qualities in 4-5 years after graduation. जैसे ग्रेजुएशन के वक्त हमने उनको नहीं सिखाया था हाउ टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, हाउ टू बी अ गुड बिजनेसमैन, हाउ टू बी अ गुड टीचर, हाउ टू बी अ मैनेजर. हाउ डिड दे ग्रो, हाउ डिड दे सेल्फ डेवलप व्हेन दे वेंट आउट इनटू द प्रोफेशनल फील्ड? तो वो तो पीईओ है. फिर PO are the qualities or the attributes that the students should have at the time of graduation, and that is why they are aligned with graduate attributes. ये PEO था और ये PO है, और PO is aligned with graduate attributes, GA. यही तो थी ना फिगर ऊपर. The qualities that a graduate of any discipline should have, you should have those qualities in the graduates of your discipline as well. अब दोनों का फर्क समझने के लिए एग्जाम्पल ले लीजिए. कोई फ्रूट है, मैंगो है, मैंगो इज राइप, आम पक गया, PO अचीव्ड. हाउ डज दैट मैंगो टेस्ट, हाउ डज दैट मैंगो लुक, अपीयर, हाउ डज दैट मैंगो स्मेल, हाउ डज दैट मैंगो टेस्ट? ये क्या है? ये सारे PEOs हैं. वो बाजार में बिकने के बाद, खरीदने के बाद, खाने के बाद पता लगेगा. अभी तो हमने पाल डाली, मैंगो पक गया, उसको हमने बेच दिया, PO हो गया, पक गया, राइप, दैट इज PO. कैसा पका, क्या क्वालिटी है, क्या स्मेल है, क्या टेस्ट है, दैट इज PEO. ठीक है. अब व्हाट इज द डिफाइनिंग ऑफ PEOs प्रोसेस? देखिए, इंस्टीट्यूट विजन मिशन से अलाइन करके आपने डिपार्टमेंट विजन मिशन बनाया था. अब इससे अलाइन करते हुए PEO. तो ये अलाइनमेंट जो है वो पूरा ऊपर से नीचे होना चाहिए, एक डायरेक्शन में, ताकि जैसे जैसे CO अचीव हो वैसे वैसे PO अचीव हो. जैसे PO अचीव हो, PEO इज बीइंग अचीव्ड, एंड मिशन इज बीइंग अचीव्ड, एंड विजन इज बीइंग अचीव्ड. राइट? विजन इज बीइंग अचीव्ड.
तो डिपार्टमेंट विजन मिशन, फिर आपने कंसल्टेशन प्रोसेस लिया, फैकल्टी को कंसल्ट किया, स्टूडेंट्स, डेटा ऑन फ्यूचर, एलुमनाई, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल बॉडीज और ग्रेजुएट एट्रीब्यूट से अलाइन किया। इन सब के व्यूज को कलेक्ट किया प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने। देयर व्यूज आर समराइज्ड बाय द प्रोग्राम असेसमेंट कमेटी। दे आर एक्सेप्टेड और रिव्यूड बाय द डिपार्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड। वर्जन 1.0, 2.0, 2.3, 2.5, है ना, 3.1, ऐसे वर्जन बनाते बनाते जब सब लोग सेटिस्फाई हो गए, तब आपका वो प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनकर आए, जो प्रोग्राम स्पेसिफिक होंगे। बीटेक इन कंप्यूटर का है तो बीटेक इन कंप्यूटर का पीईओ है, वो बीटेक इन आईटी का अलग होगा, बीएससी इन केमिस्ट्री का अलग पीईओ होगा, है ना। तो ये डिफाइनिंग ऑफ पीईओस का प्रोसेस है। अब पीओ समझने से पहले हमको जीए समझना पड़ेगा, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स क्या है। देखिए 12 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स वी टॉक अबाउट। सिंस आई एम फ्रॉम द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, सो आई से इंजीनियरिंग नॉलेज, आप साइंटिफिक नॉलेज कह सकते हैं, सोशल साइंस नॉलेज कह सकते हैं, जो भी। फर्स्ट इज नॉलेज, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम एनालिसिस, design and development of solutions, investigation of complex problem, modern tool usage. We should be capable of adopting the modern tools for solving the problems. अगर जमीन खोदने के लिए आज की डेट के मॉडर्न टूल्स हम नहीं यूज कर रहे, वही फावड़ा खुरपी लेके हम जमीन खोद रहे, will be left behind. People will have a bigger start than us. When we were students, we had the vice chancellor of our university who was an IT Kharagpur professor, Professor M.N. Farooqi. तो वो उस वक्त कहा करते थे जब हम स्टूडेंट थे कि there was a time if you don't know, there was a time if you didn't know English, you would have been treated as illiterate. फिर वो कहते थे now is the time if you don't know computers, you will be treated as illiterate. अब उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की डेट में आपसे कहूं, if you don't know artificial intelligence, you will be treated as illiterate. तो ये क्या है? मॉडर्न टूल यूसेज है ना। कंप्यूटर वाज अ टूल, AI is a tool today, tomorrow another tool may come up, so we should be in a position to carry out modern tool usage. Artificial intelligence has to be taken as a tool. फिर उसके बाद इंजीनियर एंड सोसाइटी। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, why is Silicon Valley called Silicon Valley? My answer to this question is Silicon Valley is Silicon Valley because Stanford University and University of California at Berkeley are there. These two giant universities had developed an ecosystem around them. उनके graduates, उन्होंने startups किया, those startups became success stories, they started funding these universities, better graduates emerged, they started more startup companies, they became success stories, and a very good circle came up. You talk about a developing country, हमारे यहाँ best institutes हैं, IITs are there, IIMs are there, central universities and ITs, but outside the four walls of the university, a rickshaw puller or a tea seller or a hawker just doesn't know what this IIT, IIM is all about. The benefits are not percolating down to society. So as a professional, we have to keep in mind the societal needs before us. फिर उसके बाद एक GA होता है environment and sustainability. See, I have no hesitation in admitting that we engineers are the biggest culprit of destroying our environment. There was a time when polythene came, everybody was overjoyed. Wonder materials आप, और देखिए waterproof है और insulator है और light to carry. We overproduce polythene without any check and balance. Now we are trying hoax. We are crying hoax. कि साहब वो डीके नहीं हो रही है, क्या होगा, और हेल्थ हैजार्ड बन गया, एनवायरमेंट हैजार्ड बन गया। मैंने एक जगह पढ़ा, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री।
We learn from history that we do not learn from history. We haven't taken our lessons. पॉलिथीन से हमने सबक नहीं सीखा है अभी भी. आज की डेट में भी टॉक अबाउट सोलर एनर्जी, हर जगह सोलर पैनल. और ये नहीं सोच रहे हैं 15, 20, 25 years डाउन द लाइन जब ये सारे सोलर पैनल डिस्कार्ड होंगे, ये कहाँ जाएंगे? They'll add so much more to the hazard of the environment. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोलर एनर्जी ना यूज की जाए, बट लेट अस फोरसी, लेट अस डिसाइड नाउ कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे जब ये सारे डिस्कार्ड होंगे. लोग ई वेस्ट की बात करने लगे हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग की बात करने लगे हैं, है ना. सो ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी इन प्लेस सो दैट एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. एथिक्स, एक इंजीनियर में से आप एथिक्स निकाल लीजिए, पूरे देश को बेच खाएगा वो. इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, वी शुड बी केपेबल ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली एज वेल एज इन अ टीम. सिंगल्स भी हम अच्छा खेल सकें और टीम स्पोर्ट भी हम अच्छा खेल सकें, देन वी आर अ ट्रू प्रोफेशनल. कम्युनिकेशन इज सो इंपॉर्टेंट. देखिए, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करने के लिए जस्ट कंपेयर द मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड द ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन. आप हकीमी बात करें या आयुर्वेद की बात करें, जो वेद और हकीम थे, दे वर वेरी गुड एट देयर स्किल, बट दे डिड नॉट कम्युनिकेट. वैद ने, हकीम ने अपने बेटे को भी नहीं सिखाया कि कैसे इलाज करना, हाउ टू ट्रीट द पेशेंट्स. So with all the good knowledge they had, they went to their graves or they went, they left the world. मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने कम्युनिकेट किया. वो कहाँ अब डेवलप करके पहुंच गए कि अब वो हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं. एनिमल का हार्ट इंसान में लगा, बिकॉज एवरीबॉडी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम वेयर द प्रीवियस पर्सन हैज लेफ्ट. इन आयुर्वेद एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, they had to reinvent the wheel every time, over and over again. तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग. लर्निंग डजंट स्टॉप द डे वी ग्रेजुएट. कोई बीटेक करके कहे काम खत्म तो कहा जाएगा नहीं, काम तो अब शुरू होगा. कोई एमबीबीएस करके कहे काम खत्म तो कहा जाएगा नहीं, काम तो अब शुरू होगा. टिल नाउ यू आर लर्निंग, यू हैव टू कीप लर्निंग, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग द होल लाइफ. इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंस. प्रोजेक्ट को मैनेज करना सीखना है. इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज, देयर इज अ डेडलाइन. फ्लड के आने से पहले ब्रिज कंप्लीट होना है. नहीं कंप्लीट हुआ तो फ्लड विल कम एंड द ब्रिज विल बी गॉन. अंडर कंस्ट्रक्टेड ब्रिज विल बी गॉन. ऑल आवर एफर्ट्स विल बी पुट टू वेस्ट. इसी तरह एवरीथिंग रन्स ऑन मनी, सो इट हैज टू बी फाइनेंशियली साउंड. ऐसा नहीं है कि हमारा नुकसान हो जाए तो कल को हम कोई प्रोजेक्ट ही नहीं करेंगे. So yes, this is the summary of graduate attributes that a graduate of any discipline should have at the time of graduation. अब ये इसकी वही डिटेल्स हैं जो मैंने डिस्कस कर ली, so I'm skipping these slides. तो अब program outcomes are narrower statements that describe what students are expected to know and be able to do by the time of graduation. What are the guidelines for the POs? Program outcomes basically describe knowledge, skills, and behavior of students as they progress through the program as well as by the time of graduation. They should not be too broad. They must align with the graduate attributes. They must reflect all the graduate attributes, and they should contribute to achieve PEOs. Upward compatibility honi chahiye. So iska process is very similar to that of PEOs. इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट विजन मिशन से अलाइन करके आपने पीईओ बनाया, अब उससे अलाइन करके पीओ बनाना है. ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स होंगे, फिर आप कंसल्टेशन प्रोसेस करेंगे फ्रॉम प्रोफेशनल बॉडीज, इंडस्ट्री, एलुमनाई, डेटा ऑन फ्यूचर, स्टूडेंट, फैकल्टी. Their views are collected by the program coordinator, they are summarized by the program assessment committee and accepted or reviewed by the department advisory board. Finally, when it is accepted, it is not carved in stone. Defined POs have to have a deadline कि 10 साल बाद हम बैठेंगे, 8 साल बाद हम बैठेंगे और इन POs को हम रिव्यू करेंगे. We may continue with the same, we may continue with modification, or we may change them altogether. So this is the process of defining POs.
एक और टर्म नया आया है, पीएसओ। पीओ और पीएसओ सेम लेवल पर हैं। देखिए ये आपका पायरामिड है, विजन सबसे ऊपर, फिर मिशन, फिर पीईओ, फिर पीओ विच इज अलाइंड विद ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, और सबसे आखिर में सीओ है। तो पीओ और पीएसओ दे आर एट द सेम लेवल। क्या फर्क है? 1-to-1 अलाइनमेंट ऑफ पीओ विद ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। 12 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स है तो 12 पीओ है। PSO are very program specific outcomes. They may be lesser in number but specific to a program. फर्क समझिए। एक मैं एग्जाम्पल देता हूं, डोंट टेक इट एज अ पॉलिटिकल एग्जाम्पल, आप इसको लर्निंग एग्जाम्पल लीजिए। देयर आर 3 यूनिवर्सिटीज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU। तीनों जगह MA इन हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। PO of MA in history will be same across all 3 universities. But PSO may vary. Program specific outcome may vary. AMU may say that our PSO is medieval history. BHU may say our PSO is ancient history. JNU may say our PSO is modern history. 3 phases हैं हमारे history के. So they may have the focused areas of their departments as the PSO. PO उनका सेम रहेगा। ऐसी मान लीजिए BSc केमिस्ट्री कई जगह पढ़ाई जा रही है, तो PO of BSc in chemistry will be same across different universities, but PSO may vary. Some university may say that our PSO is analytical chemistry, some may say that our PSO is organic chemistry, some may say that our PSO is inorganic chemistry, some may say our PSO is physical chemistry. So PSOs are lesser in number and specific to a program, whereas POs, they have 1-to-1 alignment of PO with the graduate attributes. अब आखिरी चीज उसमें बची कोर्स आउटकम्स, है ना। कोर्स आउटकम क्या होने चाहिए? दे शुड बी स्टूडेंट फोकस, नॉट प्रोफेसर फोकस। हम अपने हिसाब से नहीं बनाएंगे, स्टूडेंट्स का फायदा किसमें है वो उसके हिसाब से बनाएंगे। दैट मीन्स लर्निंग एंड नॉट कवरेज ओरिएंटेड। There has to be alignment between course, program and institutional levels, है ना। वो जो बार बार मैं बात कह रहा हूँ, विजन मिशन इंस्टीट्यूशनल लेवल, POs PEOs प्रोग्राम लेवल और COs आर दी कोर्स लेवल। तो सब में अलाइनमेंट होना चाहिए। अपवर्ड कंपैटिबिलिटी एंड डाउनवर्ड कंपैटिबिलिटी शुड बी देयर। फोकस एंड एबिलिटी सेंट्रल टू द डिसिप्लिन। जैसे एक आसान तरीका मैं आपको बताऊं, सिलेबस है उसमें 4 यूनिट्स हैं, हर यूनिट का जो सेंट्रल थीम है टेक इट एज अ CO। 4 यूनिट 4 COs, 5 यूनिट 5 COs, है ना। तो इस तरह से आप सेंट्रल टू द डिसिप्लिन में भी टेकन एज अ CO। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। शकील अख्तर साहब, somebody is unmuted। मैंने म्यूट कर दिया। एडमिन में प्लीज म्यूट द पर्सन। यस सर, शकील अख्तर साहब। ओके, अभी म्यूट नहीं हो रहा भाई। एक मिनट सर, कर रहा हूं। मोहम्मद शकील जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। शकील अख्तर साहब, वेस्टिंग टाइम ऑफ एवरीबॉडी। हाँ, ओके, म्यूट कर दे। मजहर साहब हैं क्या? मजहर साहब म्यूट कीजिए इनको, ये बाहर निकालिए इनको क्लास से। यस सर, अभी इनको रिमूव कर। क्लास डिस्टर्ब होती है। शकील अख्तर साहब, कैन यू हियर अस? Shakil Akhtar, can you hear us? I think he left his computer unattended.
It's better to remove him. He may join in later on. तो चौथी चीज मैं कह रहा था, फोकस ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग दैट विल एंड्योर। मैं फिर एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट आपको बताऊं। आई वाज डूइंग पीएचडी एट आईआईटी दिल्ली। So there was this foreign diplomat who was visiting IIT Delhi. So he asked one of the professors of computer science, which programming language do you teach your students? The answer that professor of computer science gave, all of us have to learn from it. He said, we don't teach them language, we teach them programming. लैंग्वेज तो बदलती रहेगी, कभी बेसिक है, फिर फोर्ट्रैन आ गई, फिर कोबोल है, फिर पैस्कल है, फिर सी है, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, कल को कोई और लैंग्वेज आ जाएगी। अगर हमने उनको प्रोग्रामिंग सिखाई, सो दे कैन टेक अप एनी लैंग्वेज दैट कम्स देयर वे। सो वी शुड फोकस ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग दैट विल एंड्योर द टेस्ट ऑफ टाइम। दे शुड बी लिमिटेड टू मैनेजेबल नंबर। बहुत ज्यादा 15 नहीं बना देने कि मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हर यूनिट का एक एक सीओ बना ले, काम आसान हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे शुड बी स्पेसिफिक इनफ टू बी मेजरेबल, because this is most important and fundamental to OBE. What we can't measure, we won't be able to control. तो इस तरह ये pyramid पूरा हुआ, विजन, मिशन, PEO, PO और COs। अब थोड़ा सा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात करें। बेंजामिन ब्लूम, मैं आपको ये दिखाऊं उनके लर्निंग लेवल्स। देखिए, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में सबसे पहला लेवल है नॉलेज, फिर उससे ऊपर होता है कॉम्प्रिहेंशन, है ना, जानना, फिर समझना, फिर अप्लाई करना, एप्लीकेशन। जैसे दुनिया गोल है, अब हमने रख लिया दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, नॉलेज हो गई, क्या मतलब है गोल का, सर्कुलर है, स्फेरिकल है, फ्लैटेंड एट दी पोल्स है, वो हुआ कॉम्प्रिहेंशन। फिर एप्लीकेशन की रोटेट कर रही है तो दिन रात बदल रहे हैं, रिवॉल्व कर रही है, रेवोल्यूशन के ऐसे सीजन्स बदल रहे हैं, है ना। सो दैट इज हाउ लर्निंग प्रोसीड्स अपवर्ड्स। फिर एनालिसिस और सिंथेसिस, इन दोनों में फर्क समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। कोई सिस्टम है, इट मे बी अ कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम है, उसमें कुछ इनपुट होगा, कुछ आउटपुट होगा। सिस्टम क्या होता है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात मैं आपसे बताऊं, शेयर करूं। कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर तो वो मशीन है जो आप देख रहे हैं। When you combine that computer with the software, with the power, with the user, with the data, then it becomes a computer system. ठीक है, तो ऐसी कोई सिस्टम है जिसके अंदर कुछ इनपुट होगा, कुछ आउटपुट होगा। If you know the input, you know the system, you have to find out the output, that is analysis. If you know the input, you know the output, you have to find out the system, that is synthesis, which is more challenging. Synthesis is more challenging. आपको इनपुट पता है, आउटपुट पता है, सिस्टम बनाना है, सिंथेसाइज करना है। एनालिसिस इज इजियर। तो ये जो डिफिकल्टी लेवल्स हैं वो ऊपर से नीचे बढ़ते जा रहे हैं। नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, और सबसे ऊपर इवैल्यूएशन, बिकॉज इफ यू कांट मेजर यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल। ठीक, तो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लेवल्स ऑफ लर्निंग है। इसको लोगों ने रिविजिट किया, अंडरसन, कारथवॉल ने 2001 में। उसमें कुछ लेवल्स वही रखे, टू रिमेंबर, टू अंडरस्टैंड, टू अप्लाई, टू एनालाइज। एनालाइज और सिंथेसाइज को उन्होंने एक में क्लब कर दिया। टू इवैल्यूएट, और फिर एक चीज उन्होंने ऐड की, टू क्रिएट। अब देखिए, क्रिएशन में दो टर्म्स आती हैं, बल्कि तीन टर्म्स आती हैं। एक होता है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन, और एक होता है इनोवेशन। इन्वेंशन, इनोवेशन, व्हाट इज द डिफरेंस? एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने का रास्ता मालूम ही नहीं था, किसी ने रास्ता निकाला, दिस इज इन्वेंशन। रास्ता पता था, somebody came up with a better route, that is innovation। ठीक है,
रास्ता मालूम ही नहीं था, रास्ता निकालने का नाम इनोवेशन है। और टू फाइंड आउट अ बेटर पैथ टू सोल्यूशन, दैट इज इनोवेशन। फिर डिस्कवरी, व्हाट इज डिस्कवरी? देखिए, इन्वेंशन डिस्कवरी में फर्क बताने के लिए लेट मी शेयर अ जोक विद यू। There was this child who asked his dad, "Dad, what is the difference between invention and discovery?" So the dad said, "Look, son, it is like this. I discovered your mom and then we invented you. I discovered your mom and then we invented you." एक चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उसको ढूंढने का नाम डिस्कवरी है। एक चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसको क्रिएट करना, टू ब्रिंग इट इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज इन्वेंशन। तो ये तीनों टर्म्स, इन्वेंशन, इनोवेशन, डिस्कवरी, दे कम अंडर क्रिएट। तो ये एक उन्होंने एक लेवल उसमें ऐड किया। एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, दे आर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हर स्टूडेंट के अंदर नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन होना चाहिए। एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन सिर्फ बेटर स्टूडेंट्स में ही होगा। एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज से अचीव होगा। बाकी जो लेक्चर बेस्ड कोर्सेज हैं, जब उसका एग्जाम पेपर बनाइए तो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन, उसके बाद किस सीओ का ये क्वेश्चन है वो दीजिए। अगर यूनिट 1 का क्वेश्चन है तो CO1, यूनिट 2 का क्वेश्चन है तो CO2। और फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल बताइए, किस लेवल का ये, और नॉलेज का है कि कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कर रहा है कि एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा है, या कोई और ऊपर का लेवल टेस्ट कर रहा है। और फिर मार्क्स बताइए उसके, इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, ये सारा क्वेश्चन। और इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। Question paper should be such that all the levels are covered so that you are able to differentiate between the good students, the average students and the bad students. अगर सारे क्वेश्चन नॉलेज के बना देंगे आप तो अच्छे स्टूडेंट्स का फर्क पता नहीं लगेगा। सारे जो आप एप्लीकेशन एनालिसिस भी बना देंगे तो खराब स्टूडेंट्स तो फेल हो जाएंगे, वो पास नहीं कर पाएंगे। तो इट शुड बी स्प्रेड अक्रॉस टेक्सोनॉमी लेवल्स। तो अब ये हमारे OBE स्टेप्स हो गए। डिफाइन आउटकम्स, डिजाइन करिकुलम, डिलीवर इंस्ट्रक्शंस, डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स। आई हैव बीन एम्फसाइजिंग डॉक्यूमेंटेशन रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल को आपने इंस्टीट्यूशन छोड़ दिया, आप कहीं और चले गए, रिटायर हो गए, so the next person should have proper documentation to start from where you left so that he or she doesn't have to start from scratch. So this is the honesty of our profession, that we document whatever we do. और फिर determine advancement, जो कुछ किया उसका advancement भी हमें पता होना चाहिए। ये सब तो measurement हुआ, और अगर हमने उसको if we can't measure, we can't control or enhance, तो मेजर करके छोड़ दें वो भी ठीक नहीं है, उसको कंट्रोल और एनहांस करना भी जरूरी है। अब देखिए, मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रही है, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान देंगे ना तो आप इसको समझ सकेंगे। इस एक फिगर में असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स भी है और कंट्रोल भी है, दोनों चीजें हैं, मेजरमेंट भी है और कंट्रोल भी है। अब देखिए, जरा मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए आप। मैंने एक एग्जाम्पल प्रोग्राम लिया, BE इन ट्रिपल, आप कुछ भी ले सकते हैं, BA इन हिस्ट्री, MSc इन केमिस्ट्री, व्हाटएवर। उसका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें बच्चों ने जो नंबर्स स्कोर किए, CO1 का जो क्वेश्चन था उसमें एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, वो डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ CO इवैल्यूएशन होगा। देखिए, फिर मैं एक चीज आपसे रिपीट करूं, असेसमेंट नीचे से ऊपर होगा तो सबसे पहले CO को असेस करना पड़ेगा। CO को असेस करने के लिए दो कंपोनेंट्स हैं, एक है डायरेक्ट कंपोनेंट और एक है इनडायरेक्ट कंपोनेंट। डायरेक्ट कंपोनेंट तो रिजल्ट से आएगा कि CO1 के क्वेश्चन में एवरेज मार्क्स कितने हैं, CO2 में एवरेज मार्क्स कितने हैं, CO2 में एवरेज मार्क्स कितने हैं, CO3 में, CO4 में। फिर आप कोर्स एंड सर्वे कीजिए। एट द एंड ऑफ एवरी सेमेस्टर, एवरी कोर्स, यू आस्क द स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू फील, हाउ मच डू यू हैव CO1 इन यू, हाउ मच डू यू हैव CO2, लेट देम गिव, उसका एवरेज ले लीजिए, वो इनडायरेक्ट कंपोनेंट हो गया। डायरेक्ट कंपोनेंट इनडायरेक्ट कंपोनेंट को एक सर्टेन रेशियो में मिला दीजिए, मान लीजिए 70-30, 70% डायरेक्ट, 30% इनडायरेक्ट, 75-25, 80-20। आप सोच रहे हो कहां से आया 70-30, 75-25? देखिए, जो भी आप डिसाइड करें उसको डिक्लेयर कीजिए बिफोर द गेम बिगिंस। आप कुछ भी डिसाइड कीजिए लेकिन उसको डिक्लेयर कीजिए। इट मेक्स मोर सेंस कि डायरेक्ट कंपोनेंट को ज्यादा रखिए, इनडायरेक्ट को कम रखिए, लेकिन कितना रखिए
वो उसको डिक्लेयर कर दीजिए। ऐसा नहीं कि पहले रिजल्ट आ जाए फिर असेसमेंट के वक्त हम देख लेंगे 75-25 रखना। अगर वो अच्छा आ रहा होगा, डायरेक्ट अच्छा आ रहा होगा तो 80% कर देंगे, और इनडायरेक्ट अच्छा आ रहा होगा तो 70% कर देंगे। ऐसा नहीं, पहले से डिसाइड कीजिए, है ना। तो डायरेक्ट कंपोनेंट, इनडायरेक्ट कंपोनेंट दोनों को मिलाकर CO इवैल्यूएशन हुआ। अब ये CO1 किसी PO में मैप होगा, CO2 किसी PO में मैप होगा, तो ये जो इसका इवैल्यूएशन है वो डायरेक्ट कंपोनेंट बन जाएगा PO इवैल्यूएशन का, और उसका इनडायरेक्ट कंपोनेंट आएगा अलुमनाई सर्वे और एग्जिट सर्वे से। एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन एज द स्टूडेंट्स, हाउ मच डू यू फील दैट यू हैव PO1 इन यू, इन यू, PO2 इन यू, PO3 इन यू, है ना। उसका एवरेज ले लीजिए, वो इनडायरेक्ट। एलुमनाई से पूछिए आपको कैसा लगता है, PO1 आपके अंदर कितने परसेंट था, PO3 कितने परसेंट था, तो वो दोनों का आप इक्वल वेटेज ले लीजिए, या आप जो भी लेना चाहें। मान लीजिए आपने कहा 70%, तो इनडायरेक्ट कंपोनेंट CO इवैल्यूएशन से, और 20% हम लेंगे एग्जिट, और 10% लेंगे एलुमनाई। ठीक है, जो भी है उसको डिक्लेयर कीजिए, इनको मिला लीजिए, ये PO इवैल्यूएशन। वो डायरेक्ट कंपोनेंट बन जाएगा PEO इवैल्यूएशन का, उसका इनडायरेक्ट आएगा अलुमनाई सर्वे और एम्प्लॉयर सर्वे। एम्प्लॉयर से पूछिए, आज से 5 साल 6 साल पहले there was a graduate who had gone out to you, how is he performing, how is she performing। स्कूल से पूछिए, हमारा ग्रेजुएट इज टीचिंग इन योर इंस्टीट्यूशन, हाउ इज ही और शी टीचिंग। इस अलुमनाई सर्वे में और इस अलुमनाई सर्वे में थोड़ा सा फर्क ये है कि ये सारे अलुमनाई हैं, वेयर एज दीज आर सीनियर अलुमनाई ओनली, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट PEO इवैल्यूएशन। PEO इवैल्यूएशन तो सीनियर अलुमनाई ही बताएगा, है ना। इसी तरह से ये डायरेक्ट कंपोनेंट हो जाएगा मिशन का, इनडायरेक्ट कंपोनेंट उसका फिर फीडबैक ले लीजिए, गवर्नमेंट से ले लीजिए, फाउंडर्स से ले लीजिए, फिर वो बन जाएगा डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ विजन और उसका इनडायरेक्ट कंपोनेंट। तो दिस इज हाउ द असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स हैपन। तो ये तो हुआ असेसमेंट पार्ट। अब इंप्रूवमेंट पार्ट, जो CO अचीव हुआ उसको टारगेट CO से कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे तो प्लस प्लस था, ऐड हो रहे थे डायरेक्ट कंपोनेंट इनडायरेक्ट कंपोनेंट, है ना। यहां पर डिफरेंस है प्लस माइनस, कि आपका अचीव CO हाउ मच हैज इट फॉलन शॉर्ट ऑफ टारगेट CO। टारगेट PO और अचीव PO में कितना डिफरेंस है, टारगेट PEO और अचीव PEO में कितना डिफरेंस है। ये सारे डिफरेंस को आप ऐड कीजिए, प्रोपोज द इंप्रूवमेंट बाय द OBE एडमिन, एंड द नेक्स्ट टाइम यू रन द प्रोग्राम दैट विल बी अ बेटर प्रोग्राम। ऐसा इंप्रूवमेंट होना चाहिए कि ये जो टारगेट और अचीव में डिफरेंस है वो मिनिमाइज होता जाए। एक वक्त ऐसा आएगा कि डिफरेंस निल हो गया या नेगेटिव हो गया, तो आप बार रेस कर देंगे, टारगेट और ऊपर कर देंगे कि भाई और इंप्रूव करो प्रोग्राम को। तो ये इस एक फिगर से आप असेसमेंट भी समझ सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रिंग अबाउट दिस इंप्रूवमेंट। तो अब ये समरी वगैरह है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। इवैल्यूएशन फॉर इंप्रूवमेंट, कैसे इंप्रूवमेंट लाएं, ये जो हमने बात की ना, इंप्रूवमेंट OBE एडमिन प्रपोज्ड इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट कैसे आएगा, 3 डायमेंशनल अप्रोच से आएगा। या तो आप क्यूरिकुलम को इंप्रूव कीजिए, या कोर्स डिलीवरी एंड असेसमेंट को इंप्रूव कीजिए, या रिवाइज रीडिफाइन द POs देमसेल्व्स। भाई आप नहीं कूद पा रहे हैं तो बार नीचे कर लीजिए, कूद पा रहे हैं तो बार ऊपर उठा लीजिए, वेट लिफ्ट कर पा रहे हैं तो वेट और ऐड कर लीजिए, नहीं वेट कर पा रहे हैं तो उसको कम कर दीजिए, है ना। ये 3 डायमेंशनल अप्रोच होती है। क्यूरिकुलम इंप्रूव कीजिए, या डिलीवरी इंप्रूव कीजिए, या लर्निंग आउटकम को ही चेंज कर दीजिए, ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो जाए। तो ये है, देखिए ऊपर वाला जो येलो में दिख रहा है ये सारा इंस्टीट्यूशनल है, ये ग्रीन वाला जो है वो प्रोग्राम लेवल है, PEO और PO, और आखिरी वाला कोर्स है। तो अब ये कंटिन्यूअस लूप है, ये आपने इंप्रूव किया और फिर ये आपने असेस किया, ये इंप्रूव किया, ये असेस किया, ये इंप्रूव किया, ये असेस किया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इनपुट्स का फीडबैक भी लेते रहिए, है ना। अब ये एडमिशन क्राइटेरिया वगैरह है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। दिस इज द प्रोसेस फॉर रीडिफाइनिंग ऑफ POs। अलुमनाई सर्वे, ग्रेजुएट सर्वे, इंडस्ट्री, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर, POs असेसमेंट, फैकल्टी व्यू, सबसे पूछिए, इज देयर अ नीड फॉर रीडिफाइनिंग POs? यस। तो एक डायमेंशन होगी क्यूरिकुलम, बोर्ड ऑफ स्टडीज विल डू, एक होगी डिलीवरी मेथड, मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर विल डू, और POs को ही चेंज करना है तो प्रोग्राम असेसमेंट कमेटी विल चेंज,
and the department advisory board will accept or review. So this is the process for redefining of POs. When to assess? Program educational objectives few years after graduation, 4 to 5 years. Program outcome upon graduation, और course outcome upon course completion. हर कोर्स हर सेमेस्टर में कंप्लीट करने के बाद उसका सीओ का अटेनमेंट निकाला जाएगा. Redefining process of POs is also similar to that of POs. Alumni survey, graduate survey, industry program coordinator, module coordinator, POs assessment, faculty views. Is there a need for redefining POs? Identify changes in curriculum. If it is, board of studies will do. Regulations में the academic council will do. Or PEO itself has to be changed. The bar has to be raised. Program assessment committee will do after one or several iterations, and department advisory board will finally accept. So this is all from my side. Thank you very much. I'll take questions now if there are any. आपके कोई questions हैं तो मैं उसको ले Thank you, सकता हूँ. sir. Participants, sir has finished his deliberations. Now, if you have any doubts, any questions, you may ask. Sir is here with us. Participants. Any comments, any suggestions, any clarifications? Yes, sir. Very good evening. I just wanted to clear doubts regarding PO and PO. Ah. Yeah, No, I so, told you, na, PO are those qualities which the graduate should have at the time of graduation. PEOs are those qualities which the graduate should have 4-5 years after graduation and working in the professional field. Example भी मैंने दी. Fruit is ripe, PO achieved. How does it taste, smell, appear? No, that is PEO. All right. yeah, sir. So I've been working on course module lately. So sir, can you kindly highlight how to go for course objective and course outcome? Are they synchronized? No, they are not synchronized. They are aligned. They have to be aligned with each other. जो एक achieve करने की कोशिश कर रहा है, the other should also try to achieve the same thing at a different level though. One will be trying to achieve it at the program level, the other will try to achieve it at the course level. And these are based on the unit. So Yes. each objective will be based on the unit, and the outcome will also be based on the unit. Your syllabus, you have several units. So every unit may have a CO. And then you will say this CO is mapped to which PO? Does it talk about engineering knowledge, or it talks about modern tool usage, or does it talk about environment and sustainability, or does it talk about ethics, or does it talk about communication, lifelong learning? कहाँ पे मैप कर रहा है वो CO? ठीक है? Okay, sir. And regarding Bloom's taxonomy, actually we are using the revised Bloom's taxonomy. So in that case, there are six levels of learning. Yeah. So is it important that level 1 of learning is which is knowledge is applicable to all the units? Yeah, every unit will have at least 3 levels. Knowledge. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Analysis, synthesis, as I said, may be part of the projects that you will do. All right. सचिन सर, Okay, got it. सचिन जायसवाल जी रेस किए हुए हैं, कुछ पूछना चाहते ये हैं? बताइए. सचिन जायसवाल, लग रहा है गलती से इनका हाथ उठ गया है. I Any think other any more comments? participants? प्रणाम सर, मुझे कुछ प्रणाम. थोड़ी सी जानकारी चाहिए. प्रतिमा हाँ, मैम. बताइए. क्रेडिट और यूनिट में क्या अंतर है सर? जी, यूनिट और क्रेडिट में. अच्छा, देखिए ऐसा होता है कि कोर्स के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्रेडिट, है ना? अच्छा. अगर 4 क्रेडिट का कोर्स है तो इसका मतलब उसको आप एक वीक में 4 लेक्चर्स लेंगे. लेक्चर ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल के हिसाब से LTP के हिसाब से चलता है. तो 4 क्रेडिट्स के 4 लेक्चर, 3 क्रेडिट्स के 3 लेक्चर.
है ना, अच्छा, इसके ऊपर तो डिपेंड। सर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो यूनिट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और क्रेडिट 4 ही है, तो उसको किस तरह से मापा जाए? जैसे एक यूनिट जो है वो तो हाँ बहुत बड़े लेवल को लेके चलता है, तो उसको हाँ, तो हम उस वीक में नहीं, 4 क्लासेस में नहीं खत्म कर सकते हैं। नहीं नहीं, 4 क्लासेस नहीं, 4 मतलब क्लासेस पर वीक। हाँ, पर वीक 4 4 क्लासेस पर क्लासेस। वीक, जरूरी नहीं है कि एक वीक में एक यूनिट कवर हो जाए, है ना। टोटल मान लीजिए आपको 12 वीक्स में पढ़ानी है 4 यूनिट, तो 3-3 वीक में एक यूनिट पूरी होगी, यानी 12-12 पीरियड लेगी एक यूनिट, अच्छा 10-12 यूनिट पीरियड लेगी अच्छा, एक यूनिट। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, चल, धन्यवाद। ओके देन, थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बहुत Thank you, आफ्टर, sir. आई विल टेक योर Thank you लीव so नाउ। much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. सर आप म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। Participants join for another lecture with the new link which has been provided already to you. You can quit from this link now. Okay, sir. ओके सर।